अरे वो थोड़ा कंप्रेस हो गया ये वो स्लाइड शो का ये स्लाइड डिजाइन ठीक एक्सपेरिमेंट करके सीखा मैंने इसलिए वो किया I see YouTube for some good cause and not for some nonsense. कुछ तुम लोग जो टाइम पास करते ना YouTube पे तो वो नहीं करता मेरे को सीखने के लिए करता क्या Pinterest वाले ये कब अरे वो पी रेड कलर दिखाओ फोटो नहीं होता पिन्स होती है वो वही ना टोमेटो which photos ये क्या सर जस्ट ऐसा हमें याद आया अभी इंस्टाग्राम का शरीफ वर्जन हाँ Instagram पे सही शॉर्ट्स नहीं होते वीडियोस होते तो बहुत छोटे बच्चे Instagram पे भी सोशल मीडिया लाइफ इज माय जीरो सर जस्ट ऐसा क्रिएटिव फेसबुक में मेरा 2000 कुछ तो कभी तो अकाउंट किसी फ्रेंड ने बना के दिया था उसके बाद कभी टच नहीं हुआ बीच लिंक्डइन में फ्रेंड ने बना के दिया था उसके बाद उसको कभी अपडेट नहीं किया उसका पासवर्ड भी नहीं पता फेसबुक से वैसा वो देखने के लिए आ जाता है किसी का बर्थडे आया तो मैं कभी अगर देखा गलती से तो मैं उसको हैप्पी बर्थडे रिप्लाई डाल दूंगा साल में एक बार तो वो भी सॉरी व्हाट्सएप में 100-200 ग्रुप्स है पता नहीं आर्चिव में डाल के रखा है सबको के और स्कूल के बोनिया वर्ग के उनको बोलता फोन करो अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो देख लेगा और फैमिली मेंबर को बोल के पे ऊपर पहुंच गया तो फोन कर देना इसके अलावा कुछ नहीं करते तो स्काइप यही तो स्काइप क्या होता है ये पता नहीं Pinterest और टीम्स टीम्स एक बार यूज है स्कूल ने वो क्या पर असल में यूज नहीं करते वो मजबूरी है करना पड़ता है नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन सोशल का आदम पूरा टाइम इंस्टाग्राम ये वो टाइम किसके पास सोना खाना बस इतने सोचता हूँ आजकल के बच्चे एक सब देखते हैं इसलिए सोचना पड़ता है I believe wasting my time rather than wasting the time on that part. बस सेहत और अच्छी हो जाएगी। Please start the part respiration. Respiration का first part जो है वो अपन ने starting में पढ़ा था respiration in plants. It's an entire division of that part. If you see over here, respiration is breakdown of nutrients to release energy. It's food, protein, carbohydrate, fats. This is the order. सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट होता है फिर फैट्स होता है और लास्ट में प्रोटीन यूज होता है कार्बोहाइड्रेट सबसे आसान सोर्स है इसके लिए पहला सोर्स होता है फैट्स गिव्स मोर एनर्जी बट वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन सो सेकंड सोर्स है एंड प्रोटीन्स गिव मी एनर्जी बट इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी सो कैन नॉट बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑर्डर सो कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स so definition catabolic process what is catabolic breakdown okay of releasing energy from simple sugar or carrying out life processes or chemical process of releasing energy by breaking down glucose of carrying out life processes. Human respiratory system, nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, etc. अब सर यहाँ पे अगर देखो मैंने फर्स्ट पार्ट पूरा स्किप कर दिया है तो अपन ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ा था अब उसमें अपन ने बेसिक पढ़ा था यहाँ पे डायरेक्टली कम टू केमिकल स्टेप्स इन रेस्पिरेशन मिला उसमें हमने पढ़ा ही था ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स मी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी वो फर्स्ट चैप्टर में ओके वहां पे अपन ने बोला 3880 याद है अब यहाँ पे थोड़ा एनर्जी को कन्वर्ट किया है मोल कैलोरीज सो 686 किलो कैलोरीज पर मोल उतनी एनर्जी हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 1 मोल ऑफ ग्लूकोज
That is nothing but 180 gram of glucose जब आप लेते हो and you burn it, then it gives me 686. So 1 mole is 180 gram of glucose. Which is nothing but 2890 kilojoules, because 686 into 4.2 will give me kilojoules, converting it into kilojoules back. अब उसको अगर मैं अप्लाई करता हूं तो देन carbon dioxide, glucose in the presence of oxygen gives me carbon dioxide, water plus 38 ATP plus 420 kilocalories. ऊपर का जो पार्ट है जो 2890 और 686 ये कैलोरीमेट्रिक वैल्यू, मतलब कार है what are the when add आता ना, Indians are very much concerned about one part in the car. What is it? The weight of emission. Somewhat better than that. तो टी पे ऐड भी आता है, कितना देती है? Mileage. That's mileage, average. Okay? कंपनी बोलती है 50 किलोमीटर पर लीटर. मैंने एग्जांपल है. मतलब क्या? 50 किलोमीटर चलते हैं भी. कंपनी बोलती है. ऑन रोड क्या होता है? क्यों? तो कंपनी का दृष्टि कैसे है? What is company 50 कैसे है? Only like distance calculated. अगर यूज जैसे AC जो पेट्रोल. हाँ वो इंजन को हीट करने में जो यूज होता है. सर वो जो निकाल रहे हैं वो कन्वेयर बेल्ट पे आ रहा है, उनके लैब कंडीशंस में आ रहा है. लैब कंडीशंस में रोड कंडीशन आया, इस ट्रैफिक सिग्नल्स आया, जैम्स आया, इंड्यूस स्पीड्स आया, नहीं इंड्यूस स्पीड्स अपना चलाने का तरीका वो सब उसमें अंदर कैलकुलेट नहीं हो रहा. वो एक अपने ऑटोमेटेड बेल्ट पे चल रहा है गाड़ी, उसके हिसाब से उन्होंने एवरेज निकाला, व्हिच इज ऑलवेज हायर साइड ऑफ. क्या आप कोई कार खरीदते हो बोलते हैं 25 किलोमीटर पर लीटर, उतना ही होगा 25 35 तक ही जाता है उसको ऊपर जाने. सो 25 किलोमीटर पर आवर बोलोगे, पर लीटर बोलोगे, पर ऑन रोड जब आप टेस्ट करने जाते हो उसको आपको 25 का 80 नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ऑन रोड इट विल बी ऑलवेज लेस. अगर 25 तो दूर की बात है. सो एग्जैक्टली सेम मैं 1 मोल ऑफ शुगर को एक किलोमीटर में बर्न कर, इट्स अ पार्ट लाइक से अपना थर्मस होता है वैसे होता है वो, इसमें मैंने बर्न कर दिया तो क्या होता है, थर्मस में कोई हीट रिलीज नहीं होती है, वैसे इसमें कोई हीट एस्केप नहीं होगी, तो वो उसके अंदर ही हीट रिलीज हो जाएगी एंड देन वी कैन एबल टू मेजर. तो उसको मेजर करता हूं तो मुझे पता चलता है 686 कैलोरीज रिलीज हुई. ये कब हुआ? लैब की कंडीशन में. अब मैं अगर वही मोल ऑफ ग्लूकोज को अपने बॉडी में डालता हूं, बॉडी लैब नो, तो अपना बॉडी इसको क्या करता है 38 एटीपीज में कन्वर्ट कर रहा है एंड सम अमाउंट ऑफ हीट वुड बी रिलीज. तो वो सम अमाउंट कितना है 420. वो कैसे कैलकुलेट किया? सिंपल लॉजिक से कैलकुलेट किया. नीचे देखो लिखा है स्मॉल इसमें 1 मोल ऑफ एटीपी 7 किलो कैलोरीज. ठीक, सो एक एटीपी 7 मोल्स को रिलीज करेगा, 7 इसको करेगा. सो व्हाट विल हैपन 7 किलो कैलोरीज को 38 कितने में रिलीज करेगा? 38 into 7 that is 266. शुगर से कितना मिला मुझे टोटली 686 minus 266 that would be released by the body in the form of heat, because उसमें उतना ही एनर्जी है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, इससे कम हो नहीं सकता. तो उसमें से मैंने एटीपी में इतना निकल गया तो बाकी जो बचा है वो हीट में जाएगा. that is what they do. सेम गोस फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. उसके बाद कंपैरिजन दिया है एट द स्लो प्रोसेस लैक्टिक एसिड नो CO2 प्रोड्यूस एंड लेफ्ट. नीचे कंपैरिजन दिया है, फिर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन दिया है, ब्रीथिंग, गैसियस ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड इन द लंग्स इज कैरिड बाय RBC इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड from tissue is absorbed by the lungs by the blood by means of two ways, bicarbonates and carbaminohemoglobin. ऑक्सीहीमोग्लोबिन सुना है? हाँ ना सुना है. ऑक्सीजन combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin.
Same way, carbon dioxide combines with hemoglobin to form कार्बamino hemoglobin. तू जो बोल रहा है कार्बोक्सी एस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस दिस एस कार्बोक्सी हीमो. अब सबसे पहली चीज समझ, हीमोग्लोबिन कॉमन है तीनों में, तो इट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक. मेरा आई एम मान लो तुम नॉन वेजिटेरियन खाने वाले, यू आर अ डाई हार्डकोर नॉन वेज खाने वाले, तुम्हारे सामने तीन डिश रखी है. पहला डिश चिकन तंदूरी, दूसरा डिश फ्राइड चिकन, पिज्जा, वेज पिज्जा. अरे कौन से भी होता है, वेज बोला ना. तीसरा घर का सब्जी रोटी में भी करेला या भिंडी ऐसा कुछ, क्या गोभी कॉलीफ्लावर उस कैटेगरी. व्हाट इज द फर्स्ट चॉइस? नॉन वेज खाने वाले हो तो ऑब्वियसली फर्स्ट इज तंदूरी, सेकंड पिज्जा, लास्ट सब्जी. वो कब होगा? वेरी डायजेशन खत्म होता है. पहले तो है ही नहीं. मम्मी बोलती बेटे खाना खाना है तो खा, नहीं तो जा बाहर रे भूखा. आधे घंटे के लिए भूखे रहोगे, फिर चुपचाप उठ के भाई जो बनाया खाओगे. हाँ क्या ना. सो माय क्वेश्चन नाउ इज, इन तीनों में से फर्स्ट चॉइस क्या है मेरे? ऑक्सीजन, सेकंड चॉइस, कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड चॉइस, कार्बन मोनोऑक्साइड. गुड. फर्स्ट चॉइस कार्बन मोनोऑक्साइड. If your body is surrounded by three molecules, मेरा hemoglobin सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को अटैच, because its affinity to carbon monoxide is very high, and that is उसका chemistry part affinity, and that is why if you are in a and put a polluted environment जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको ज्यादा अफेक्ट है, because liking is null. समझना? अब you are not in carbon monoxide environment, carbon dioxide and oxygen, तो आप किसकी एफिनिटी आ रही है? नो, ऑक्सीजन. अब उसका सेकंड चॉइस क्या है? ऑक्सीजन. ठीक लेना है. तो when you are in a environment जहाँ पे there is a pollution, but कार्स अपन जब यूज करते हैं तो आजकल कार्स में इनबिल्ट होते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स. पहले बहुत रेयर चीज थी, अभी सब में. अच्छा तो अब कैटालिटिक कन्वर्टर्स का काम क्या है? पहला ये बहुत कॉस्टली, तो हर एक कार में नहीं. अब इसका काम क्या है? व्हाटएवर फ्यूल यू आर यूजिंग, इट को कंप्लीट कंबशन कर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. पर अगर ये नहीं होता है तो इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड. दोनों पोल्यूशन है, बट व्हिच इज बेटर है? CO2, व्हाई? because it is not poisonous. पॉइजनस वो भी है, पॉइजनस वो भी है. CO का ज्यादा डेडली इफेक्ट है. ये मेरा पहला लाइकिंग है ना. तो इफ माय बॉडी, इफ द कार इज इन कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी एफिनिटी कितना ज्यादा है? CO. तो पहला लेगा. तो एम आई क्रिएटिंग प्रॉब्लम? यस. तो व्हाट इज द ऑप्शन? मैं CO2 बना रहा हूं. दिस इज द फर्स्ट चॉइस? नो, उसका सेकंड है, पर वो लास्ट चॉइस है. सो इसके लिए तो ऑक्सीजन पहले आता है. अब आता है लास्ट चॉइस. व्हिच इज द लास्ट चॉइस? CO2. अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल्स CO2 के and there are 10 molecules of hemoglobin, so what should be the proportion? मतलब 10 मॉलिक्यूल CO2 के, 10 मॉलिक्यूल के बाकी कोई भी नहीं है. सर 10 के 10 कंबाइन होके निकलना चाहिए. as simple as that. ऐसा है. hemoglobin for good.
कार्बन डाइऑक्साइड वेरी रेयरली कंबाइंस विद मी, उसकी एफिनिटी है पर बहुत कम। मतलब अभी जैसे आपने कहा सर मजबूरी है, कुछ नहीं मिला तो चुपचाप करेला का भी सब्जी खाना पड़ेगा, तो ऐसा हाल है। मजबूरी है इसके लिए कंबाइन करना, अब वो मजबूरी क्यों है? समथिंग द आंसर लाइज इन द हिंट। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, इतने शरीफ तो हो नहीं कर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते। बोलो डन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे ना सुनो, डू योर मम्मी और डैडी ड्रॉप्स यू इन द स्कूल? मम्मी डैडी ड्रॉप करने आते हैं स्कूल में, स्कूल के बाजू में रहते हो, वॉकिंग डिस्टेंस, एक्सेस से जाते हो, रिक्शा से जाते हो, या बस से जाते हो, वॉकिंग कोई नहीं जाता। कभी कभी जाते एग्जाम, तो आप सोचना दिस इज योर स्कूल बिल्डिंग, ऊपर के सामने जो अपना रूम्स है, मतलब जो हाउसेस है, वो आपका घर है, ओके, एंड यू आर इन टेंशन साइड एंड आई साइड, and you have to come from there crossing one single road and this side is your school, and your mom and dad comes to you, drop and pick you up every day, catching your finger and you dropping it. अच्छा लगेगा क्यों? नजदीकी है, हम जा सकते हैं छोटे में। फर्स्ट स्टैंडर्ड में अच्छा लगता है, प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में मम्मी डैडी हाथ लेके पकड़ के लेके आते, तब क्यों? नजदीकी तो है, जान से ना कुछ, तो छोटे थे, अब क्या हो गया? तो क्यों? मम्मी डैडी तो वही है, अभी इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट है, आई मीन अभी रोड पर अभी शर्म आती है, अभी शर्म आती है, एम्बेरसमेंट लगा, बच्चा फ्रेंड चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे, ए मम्मा आज वो आया दूध पीता बच्चा, है ना? ऐसे बहुत कुछ, अरे ऐसा सच बात थी ना, पर नहीं, मुझे तो रोज यूट्यूब में ड्यूटी दूर है नहीं, मेरे घर के पास इधर, इधर अब रात को है ना 8:30 बजे, इसके मम्मी थोड़ा केयरफुल, यू बीइंग नॉटी, थोड़ा और ज्यादा केयरफुल, मम्मी को सुना कि रह गई तो फिर और ज्यादा केयरफुल, इसको पूछो ऐसा होता है? नहीं होता है, छोड़ दिए, ये जल्दी छोड़ दो, आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी देखो, उसको देखो, इसको थोड़ा कंसीडर करेंगे बिकॉज़ यू आर गर्ल, इनका कुछ नहीं करेंगे, बेकार है बस। इतना सिंपल है, वहां पे लिखा भी देखो आंसर में, when the blood is carrying the carbon dioxide, the blood is made up of water, 90% is water, and in water CO2 is easily soluble. कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बियर, for that matter, ना? मैंने कहा वो कुछ बोल रहा है, पीता है कि नहीं पीता, उसने कुछ बोला है, वो किसी ने बोला ना चोर के क्या, चोर की दादी तो ये तो जस्टिफाई नहीं कर रहे, पर तू जस्टिफाई कर रहा है, मतलब कौन पीता है कौन नहीं पीता उनको भी समझ में आ गया, okay? So up then when you can walk from there on your own, do you need your parents? No, आप आसानी से आ सकते हो, खुद से आ सकते हो। So when the CO2 can easily dissolve in the water in the form of bicarbonates, does it require a carrier हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए? नहीं, पर कभी कभार पेटीएम में हाथ पकड़ के लेके जाना मजबूरी है, okay? And that is what कार्बामीनो मीन्स, उसकी एक्टिविटी सबसे कम है, समझ में आया? Then टिश्यू रेस्पिरेशन,
Terminal blood flow process delivers the oxygen to the body. There is a tissues where oxygen diffuses to the inwards. Similar way, capillaries pick up carbon dioxide, exchange of gases. सेल टिश्यूज तक जाएगा और वहां पे वो सेल को देगा, सेल से CO2 लेगा और वापस लेके आएगा. लास्ट सेलुलर रेस्पिरेशन अल्टीमेटली द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी. फिर आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, नोज, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई. वो ब्रोंकाई का इतना बड़ा सब कुछ दिया था, वो बकवास ही शॉर्ट में करना. सो वी गो विद द फर्स्ट पार्ट. नोज, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, लंग्स. ये अपना नमूना नोज. ओके, फ्रंट व्यू, हेड व्यू, कार्टिलेज का व्यू है और ये पूरा उसके अंदर का सब कुछ दिखाया रहा है. द रिसेप्टर्स इज रिसेप्ट. तो अगर आप पढ़ोगे नोज पार्ट में देखना पड़ा द नोज बियर्स द नॉस्ट्रिल्स. तो ये जो नॉस्ट्रिल्स है, ओके, व्हाट आर प्रेजेंट इन दिस टू पार्ट्स? cartilage, And hair. So two important structures. There are mucus and there is hair. So वहाँ पे separated by cartilage septum, the hair must prevent large particles from entering system. Hairs block the dust particles and large particles which are trapped over here and immediately fall down at the base in the mucus. Mucus is a role, okay? It will be expelled out when you do sneezing, coughing, नहाते वक्त वो automatically निकल जाता है. कभी कभार नहीं निकलता है तो आप उसको ऑटोमेटिकली पर मैन्युअली कुछ जन की आदत होती है. डिपेंड करता है ना किसी को. Then the two nostrils open into a nasal chamber. The inner lining of nasal chamber performs three functions: warms air, moisture air, and traps harmful particles. Now why warms the air? Then when it is passing through this part nostril से यहाँ पे hairs है. Hair के base में blood vessels होते हैं. Because we said क्या hairs at the base had the blood vessels. Because of the blood vessels heat is lost. तो वहाँ से वो heat pick up कर लेता है ताकि जो air अंदर जा रहा है वो slightly warm हो. This warm air diffuses faster in the air. And that is why वो warm करना important. Second, moisture to the air again for same reason. And lastly, traps harmful particles. उसके अलावा at the always breathe through the nose and do not through the mouth, because when we breathe through the nose the air is filtered and warm, but when we breathe through the mouth it is not filtered. Okay, so it is harmful to breathe through the mouth. Additionally, function of the nose is to smell, because at the end of this part, in the interior part of the part, there is a olfactory region, sensory cells which are responsible for the smell. तो आपको वो वहाँ से जमीन. Then does the nose help in speaking? Yes, वो आप देख लेना तो पड़ेगा. Okay, then comes the pharynx. Nose के आगे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आता है alternative opening and then comes the nasopharynx, जहाँ से nose और pharynx का combined part है. तो nose पीछे आपके pharynx को जाके combine होता है, that is the pharynx part. A pharynx, the nasal chamber open at the back into wide cavity of the pharynx, situated at the back of the mouth. So nose कहीं ना कहीं जाके mouth की जगह पे combine होता है. It is a common passage for air and food. It leads into the air tube, trachea, and a food pipe located dorsally behind the trachea. When not being used, the food tube is partially collapsed as soft walls. जब यूज नहीं होता है तो food को collapse हो जाता है, but जब यूज होता है तो food को तोड़ के उसके से खाना चला जाता है. Then the end of trachea is guided by a flap called epiglottis, which closes at time of swallowing food. Incomplete closure of epiglottis during swallowing causes curve. अब यहाँ पे application based question है. अच्छा खासा application based. We should not talk while eating. Give reason. Good. there is a release and then the epiglottis opens and you can epiglottis and you can You can? die. देख खाना खा तो तुम मरते क्या? You can डाय तो होती नहीं. और दूसरा तूने जो बोला उसमें टॉकिंग का क्या रिलेशन है? there is need to speak. Good. So Epiglottis opens. So when we are eating the food, at the same time we are talking, the breathing occurs, due to which the
covering of the trachea which is known as glottis. इसके ऊपर is a flap known as epiglottis opens. So food which has to go into the food pipe accidentally goes into the vein pipe, leading to choking effect. मरेंगे नहीं. Okay? बहुत rare case. So there will be a choking effect and you will immediately cough. Reflex action. और बाहर. Okay? बाहर मतलब आनी अंदर ही बाहर. Okay? ऐसा नहीं होता. Then comes the larynx. Now what is larynx? The voice box, often known as Adam's apple, hollow cord structure located on the start of the windpipe. You can fill it with your fingers. In the front part of the neck, when swallowing something, this part rise and fall. इस तरह specifically पानी पीते हो सब तो सब ऊपर नीचे होता है. Okay? Contains two ligamentous fold called vocal cords. As expelled most of the vocal cords vibrate and producing sound. When situated to cords, the tension by means of attached muscles, a range of sounds can be produced. तो वो आपका epiglottis part और ये है आपका cartilage. You can say something like a guitar का strings. तो यहाँ पे वो strings है, इससे pass होता है, टिंग 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 बजता है और टिंग 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 आवाज आता है. Okay? कौन से इसमें स्पेशल म्यूजिक फ्रीक्वेंसी में बजेगा उसके सबसे वॉइस क्रिएट होगा. Then comes the trachea. The trachea or the windpipe runs from the larynx below the neck, where it is partially covered by thyroid gland. It was a canter strengthened by C-shaped cartilage rings. The incomplete part of the rings being on the back side. The rings were flexible can keep the trachea distended permanently. अब important है ये समझना. ये है trachea, उसके पीछे है आपका the food pipe. But trachea is supported by cartilage rings. So first question, सोच समझ के सुनना. What is the function of cartilage rings? To give support to the trachea. It prevents collapsing of the trachea. मतलब वो support का काम कर रहा है, इसके लिए collapse होने से बचाता है. दूसरा question, why are the cartilage rings C-shaped? अब ये तो बेवकूफी है. सर तू गधा है अगर बोला, गधा है बोला तो गधा ही है ना वो, उसको गधा का उसका क्या होता है. अपन यहाँ पे बोले कार्टिलेज रिंग और मैं बोल रहा हूँ उसका शेप क्या है, और बस रिंग होना चाहिए, और वो रिंग ना होते हुए सी शेप है, इनकम्प्लीट है. सो व्हाई दे आर इनकम्प्लीट? The shape is connected to a strings. Why are they C shape? एक साइड पे काट ले उतने सुना दिया उसका क्या माम नहीं. एक साइड में काटे इसको वो चिपक के ऐसे सपोर्ट के वो दे रहा है, तो कार्टिलेज रिंग है ना, उसको पीछे क्यों नहीं है? क्यों बीच में कार्टिलेज है ना, तो कैसे? अरे बीच में कार्टिलेज नहीं है, कार्टिलेज पूरा है. अरे ये रिंग है, ये यहाँ से लेके यहाँ पे कार्टिलेज है. अपन ये बोल रहे कि ये कार्टिलेज यहाँ पे क्यों नहीं, इस तरफ कार्टिलेज क्यों नहीं? SSCs can open and close. वो ऐसे भी ओपन अप होता है, उसका रीजन नहीं है. जिसने बोला मेरे पास घर पे कार है, बोला बड़ा बोलो कार है क्या, बोला है कार, साइकिल, बाइसिकल, टू व्हीलर कुछ तो होगा. कभी पेट्रोल पंप पे हवा भरने गए, भरते हो देखा है? कैसे पता है हवा भर गई? ऐसा लिंक होता है. लिंक होता है या आवाज आता है? लिंक भी होता है, फिर आवाज करता है, वो बात है जब पास ऊपर उसका आवाज बंद हो गया. Normally there is a sound also and there is a blinking also. मतलब आप 32 का डालते हैं या 28 का डालते हैं वैल्यू DSI, और उतना वैल्यू पे आने के बाद वो स्टॉप करके ब्लिंक करता है या आवाज करेगा, तो बंदे को पता चलता है कि स्टॉप कर. अब पे पेट्रोल पंप पे हाईटेक पेट्रोल पंप नहीं होते, नॉर्मल अपना रस्ते वाला हवा भरने वाला,
गाँव जाते वक्त गाड़ी पंक्चर हुआ कुछ कम हुआ तो वो हवा भरता है, वो कैसे चेक करते हैं पता नहीं। हाँ दवा नहीं मेरा फोर व्हीलर का टायर हवा भराएगी, अबे तेरा साइकिल है कि कार है, और ट्रक वाला बोलेगा टायर है ना, हवा भराएगी, इसकी जिंदगी लगेगी उसको दवा नहीं मिल सकती। अच्छा तुम कभी टायर में हवा नहीं जा रहे। Then when you do it in local stations, local part में, तो उन लोग हवा भरने के बाद उनके पास एक गॉज होता है, PSA गॉज, थोड़ा राउंड स्ट्रक्चर का गॉज होता है, इसके ऊपर एक नली होती है जो अटैच करते हैं, जैसे वो मशीन पे दिखाता है वो गॉज पे दिखाता है, इट्स अ मैनुअल गॉज, इट्स लाइक सिंपल, अपना कभी ब्लड प्रेशर चेक किया होगा, तो ब्लड प्रेशर का एक मशीन आता है, बटन दबाया मशीन में निकाल देता है, और वो जो अपने डॉक्टर के पास होता है ना, वो जब पुराना वाला मैनुअल वाला, तो वो पुराना वाला मैनुअल वाला राउंड वाला होता है जो लगा के चेक किया है, उसमें काटा हुआ उतने रेंज पे दिखाया, हो गया, भर गया, ठीक है। अब do we carry such thing in our pocket? नहीं, हमें लगा सब कैरी करते हैं, मतलब जब हवा लेते हैं, okay, so we take that gauze and keep it over here, so उनको सब कितना प्रेशर आ रहा है, देखो सब कम आ रहा है, सब ज्यादा आ रहा है, is it like this? No ना, यार आते रहते जाते रहते हैं, is it the same pressure? नहीं ना, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, so when it is at low pressure not the problem, कोई इफेक्ट नहीं है, पर गलती से हाई प्रेशर में हो और कार्टिलेज रिंग पूरा रिंग होगा, पूरा रिंग, हवा आया बहुत ज्यादा प्रेशर से जा सकता है, एक्सपांड हो सकता है, क्या होगा, छोटा सा दीवारी धमाका, एक ही बार फटेगा, उसके बाद तुम जिंदा ही नहीं होगे, as simple as that, the story ends there itself. So God is really a wonderful creator, क्या किया है, पीछे जगह छोड़ा, भाई ज्यादा आया तो एक्सपांड कर, okay, so that cartilage ring is absent at these points because it is intentionally leaving space for expansion. Am I clear? Next, then comes the bronchi. अब ध्यान देना, यहाँ से आपका bronchi से लेके नहीं, वो इतना जो पैराग्राफ है यहाँ तक का, ये वाला कुछ काम है, दो लाइन देखो, पूरा बकवास है, हमें क्या पढ़ना है, ये ट्रकिया, this point is known as bronchi, further divides into left and right, इसे अपन बोलते हैं primary bronchi, left bronchus and right bronchus, further divides into what we say primary, further divides to form secondary, further divides to form tertiary, तो वही लिखा है देखो, each bronchus divides into point secondary bronchi, which further divides into tertiary bronchi, the cartilage rings are those present on the trachea, also present on smaller bronchi to keep them distinct. Bronchioles are subsequent final tubes of the tertiary bronchi. Tertiary bronchi का एकदम final tubes को बोलते हैं bronchioles, which are further divided into 1 millimeter of diameter, which is of no cartilage. तो इधर cartilage rings नहीं, तो यहाँ तक है. So primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi. Tertiary bronchi is going to bronchiole, which are further divided to smallest branch, which is 1 millimeter in length. 1 millimeter कितना होता है? ये डॉट भी शायद मोटा होगा, ये 3-4 मिलीमीटर का होगा, 4 मीटर से पतला होगा, उतने इसका आपका डायमीटर बचता है ऑफ द लास्ट पार्ट, जो एंड अप होता है आपका the bag like structure known as alveoli or air sac. तो यहाँ पे आपका ये air sac, okay, that's वो पूरा पार्ट उतना ही दिया, उसके बाद come to the next part, that is protective inner lining of respiratory passages.
अब राइट फ्रॉम द इधर से लेके पूरा ब्रोंकियल से पूरा पार्ट तक you will find that each lining is protected by the entire lining of larynx, trachea, bronchi, bronchioles is form of ciliated epithelium. नीचे डायग्राम दिया है देखो, ऐसे सेल्स दिए हैं और बाजू में सब सिलिया दिया हुआ है। ये पूरा लाइनिंग ciliated epithelium से। Why ciliated epithelium? Because उस ciliated epithelium में there are goblet cells जो mucus create करते हैं। Air passes like this. Cilia breathes upwards. तो वो एयर को नीचे की तरफ पुश करता है एंड एनी डस्ट पार्टिकल व्हिच इज बाय मिस्टेकली एंटरिंग इज पुश्ड अपवर्ड्स दैट इज व्हाट द cilia epithelium is. So during life the cilia are constantly in motion driving any fluid that is on them and also particles that have come in with air towards the mouth. तो ये बाहर निकालेगा और एयर को अंदर पुश करेगा. Then comes the lungs are a pair of spongy and elastic organs formed by the air sacs. The connecting bronchial blood vessels, the two lungs are round, roughly cone shaped. Lungs ये lungs which are cone shaped. Then the left lung has two lobes. तो अगर आप देखोगे left में two lobes होते हैं और right में three lobes होते हैं. Okay? The left lung slightly smaller to accommodate the heart in between. Left थोड़ा छोटा होता है because उसमें heart को accommodate करना है. Membranous covering of the lungs. अब lungs के ऊपर there is a covering. This covering is known as your क्या पढ़ा आपने स्कूल में pleural membrane. हार्ट के ऊपर होता है पेरिकार्डियम, लंग के ऊपर होता है प्लूरा, ब्रेन के ऊपर होता है मेनिंजिस, किडनी के ऊपर होता है कैप्सूल, ओके, लीवर के ऊपर भी होता है कैप्सूल. Each lung is covered by two membranes, the inner visceral pleura and the outer parietal pleura. अगर इस डायग्राम में दिखाओ, ये वाला पार्ट है आउटर, ये वाला पार्ट है इनर. ये आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा. ओके, आउटर प्लूरा को अपन बोलते हैं द पैराइटल और इनर को बोलते हैं विसरल. और इन दोनों के बीच में देयर इज अ फ्लूइड फील्ड व्हिच इज नोन एज द प्लूरल फ्लूइड. लुब्रिकेशन का काम करता है एंड कीप्स द लंग्स स्टैंडिंग. So after pleural cavity found between two membranes, the arrangement provides lubrication for free movement and expanding and contraction of the lungs. The lungs occupy the greater part of the thoracic cavity. They are close to the inner surface of the thoracic wall, and the lower versus directly rests on the diaphragm, a characteristic feature of class Mammalia. सिर्फ हमारे में diaphragm होता है. Okay. Then comes blood supply to the lungs. बिल्कुल मत गलती से भी मत करो. अच्छा काम वहां से लेके ब्लड सप्लाई टू द लंग्स से लेके नेक्स्ट वो एक जो पैराग्राफ दिया है नन उसका सिंपल क्या दिया है बता दो. The blood is coming from the heart to the lungs is carried via pulmonary artery. What type of blood? तो ये pulmonary artery है जो deoxygenated blood लेकर. Okay? Lungs क्या करता है उसको ऑक्सीनेट करेगा and further carries out via pulmonary vein. This arteries when it comes on to the alveoli divide to form spine branches known as blood capillaries. वही बकवास लिखा है पढ़ लो. जो अंदर आ रहा है वो आर्टरी है पर डीऑक्सीनेटेड है. कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है which has both oxygenated and deoxygenated, and when it goes out it is a pulmonary vein but carries oxygenated blood. Then comes breathing, respiratory cycle. Now what is respiratory cycle? When we breathe one air inside and outside, one cycle of inhalation and exhalation, इसको बोलते हैं breathing. How many times do we breathe in a minute? 72. घड़ी है? मोबाइल है?
निकाल टाइमर होगा एक मिनट अब चालू कर दो और ब्रीथिंग को काउंट कर 1 मिनट you will do like this ऐसे हाँ काउंट करना नहीं हो पाएगा मेरे से नहीं हो पाएगा तुम लोग करो चलो हंसी आ रही है पता नहीं if you say your breathing is 72 times per minute then your breathing has to be sorry 12 to 18 times होता है the breathing is for 1 minute 12 to 20 20 12 18 20 तक जाता है अगर 72 टाइम्स हुआ तो बात करने का टाइम ही नहीं है ऐसे करोगे कुत्ते में और तुम्हारे में वैसे भी कोई फर्क नहीं अभी भी नहीं है पर वैसे भी नहीं है फिट होता है क्या 8 बीट होता हाँ है भाई ब्रेक हो गई समझ में आ गया कितनी बार बोल रहा The है respiratory consists of inhalation and expiration that is nothing but respiratory pause, very short respiratory pause. हमारे इसमें 12 to 18 is the normal beat per minute. A newborn may be 60 times per minute because उसका lungs अभी well developed नहीं. Okay? Slight increase in the CO2 content increases the breathing rate. अब आते हैं inspiration और expiration. इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ है. Okay? Then अब फिलहाल पैराग्राफ को छोड़ो द ब्लू बॉक्स को छोड़ दो अब फिलहाल बेसिक चीज पे ध्यान देना बिकॉज दिस वुड हेल्प यू टू मिनिमाइज द लर्न वरना इतना पूरा बकवास पढ़ना पड़ेगा सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहला है इनोलेशन में होता क्या है अंदर या बाहर अंदर एक्सलेशन में बाहर सो रफ डायग्राम आपका लंग्स है ट्रकिया है बाहर फिर आपका वो जो भी है ना इनहेलेशन में अपन क्या बोलते हैं द एयर कम्स इनसाइड ना व्हाई इट कम्स इनसाइड द लंग्स आर एक्सटर्नली प्रोटेक्टेड बाय रिब्स हम सबको पता है ओके ना रिब्स आर नॉट अलोन बट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इंटरकोस्टल मसल्स अब इसमें आउटर इंटर आप उसमें जान नहीं रहे अपन सिर्फ फिलहाल बेसिक बोल रहे हैं क्या दे रहा है इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के बीच में होते हैं व्हाट इज दिस पार्ट डायफ्राम सो वी हैव टू सक्सेस टू रिमेंबर एक है इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स वी हैव डायफ्राम व्हिच इज आल्सो अ मस्कुलर स्ट्रक्चर व्हाट आर दिस ribs ये ribs है now we all know muscles have an inherent property that is contraction and relaxation so अपन अभी पहला कंडीशन पकड़ रहे हैं the diaphragm contracts खींचा जाता है so it is contracting it is being pulled outward and downward बाहर आउटवर्ड मतलब डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है तो वो डायफ्राम खींच के नीचे आए एट द सेम टाइम द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट अपन वो सेम रख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ सो इंटर मसल्स कोस्टल कॉन्ट्रैक्ट thereby pulling the rib cage slightly outward थोड़ा बाहर इज इट लाइक दिस ऐसा खुलता है नहीं ना hardly few millimeters और rib cage थोड़ा बाहर upwards and outwards is the movement थोड़ा ऊपर you can see no बाहर ऊपर देखो तो ऊपर जा रहा है थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है so it is moving upward and outward इतना समझ में आया what will happen to the volume over here
सो thoracic वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये बाहर आया, ये नीचे आया, तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, ये कॉमन सेंस है। सो व्हाट हैपेंस टू द प्रेशर इनसाइड द लंग्स? डिक्रीज, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। अगर मैं दीवार को और दूर करूं तो इसके अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मैं दीवार को और क्लोज करते जाऊंगा तो बीच में एयर ब्लॉक हो जाएगा, तो वो और ज्यादा हाई प्रेशर पे होगा। तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हुआ। व्हाट इज एयर एट द आउटसाइड? इसके कंपैरिजन में क्या है प्रेशर वाइज? लो प्रेशर, अरे ये लो है ना, हाई प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर है। व्हाट इज एयर एट दिस पॉइंट? लो प्रेशर, Where does air move? High to low. हाई So where is happening? Air rushes inside. A process known as inhalation. Then इतना ही पढ़ना है। अब मैं उसमें और ऐड करना वाला हूँ, पर आपको इतना समझ में आ गया? अच्छा, सिर्फ ये अगर आपने ढंग से कर लिया, your entire part is done. वो 2 पेज का काम खत्म हो गया। रीजन, अब you will only explain me exhalation. Exhalation में अपन रेड पेन यूज कर रहे हैं। What will happen in exhalation? Pressure low हो जाता एयर किधर जा रहा है? है। बाहर बाहर। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होंगे? ब्लड डायफ्राम, डायफ्राम क्या होगा? रिलैक्स। तो ये कहाँ जाएगा? बैक टू नॉर्मल पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन? यस और नो? ये वापस गया इधर। The intercostal muscles relax. Where are they going? Downward and backward. Back to normal position. वापस अपनी जगह पे आ गया. So what happens to thoracic volume? Compared to that, pressure increases. Inside pressure is high. Outside pressure is less. So air from inside goes outside. Process known as, समझ में आया? बेसिक है। अब उन्होंने क्या किया है, इस बेसिक को थोड़ा चेंज किया। What they have said is इंटरकोस्टल मसल्स के 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो ब्लू बॉक्स पे जाना, दिखाई दे रहा है ब्लू बॉक्स? पहला लिखा है डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन डाउनवर्ड्स। वही लिखा है अपन ने, पैटर्न और डाउनवर्ड, पैटर्न लिखा डाउनवर्ड्स लिखा है। ओके, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान रखना, इन्होंने सिर्फ इसको ना चेंज किया है। हमने कहा इंटरनल कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब इन्होंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है क्या जो मैंने कॉन्ट्रैक्शन बोला है इसके लिए, मतलब हम जो बात कर रहे हैं जनरली वो एक्सटर्नल मसल्स की है। तो व्हाट इज दिस? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इंटरनल कोस्टल मसल्स क्या होंगे? उसके अपोजिट, इट वुड रिलैक्स। सिर्फ ये याद रखना है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड किया है वो जनरली एक्सटर्नल के लिए यूज किया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके लिए अंदर के मसल्स रिलैक्स हुए। सो वहां पे वो नीचे इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स और स्ट्रेच। रिब केज और स्टर्नम क्या हो रहा है? मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। ये भी मैंने कहा था। वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases, air pressure decreases inside the thorax and lungs, fractional air pressure drives air into the lungs at a low pressure. वही आपने एक्सप्लेन किया। अब उल्टा, the diaphragm relaxes। अब यहाँ पे इंटरनल कोस्टल मसल, मतलब एक्सटर्नल कोस्टल मसल, हमने इसको कंसीडर एक्सटर्नल कोस्टल मसल ही पकड़ के चला है। तो एक्सटर्नल कोस्टल मसल रिलैक्सेस, तो इंटरनल कोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। तो वही लिखा हुआ है, सिर्फ उतना ही याद रखना है आपको, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स सेम। सो वो पढ़ लेना। देन कम्स control of breathing movements. Now what is control of breathing movements? The breathing movements are largely controlled by respiratory center located in the medulla oblongata of the brain.
The center is situated by the carbon dioxide. Center is simulated by the carbon dioxide content of the blood. More the carbon dioxide content in the blood, faster is your breathing. Because आपको carbon dioxide का effect है, venous blood volume. The breathing movements are normally not under the control of the will; they are involuntary. But to some extent, one can consciously increase or decrease the rate and extent of breathing. Very common example, meditation. मैं आपको breathing exercise पे control करूँगी. Okay? If you are forcibly holding your breath, the stage would come when you cannot hold it any longer. Okay? Can we do it for longer period of time? Obviously, no. So, उसके बाद आप मर जाओ. Then comes capacities of the lungs. फिलहाल इसको होल्ड पे रखते हैं, फिर आगे फिर लगाते हैं. फिर आता है इंस्पायर्ड एयर वर्सेस एक्सपायर्ड एयर. तो व्हाट इज इंस्पायर्ड एयर? जो अंदर आता है और जो बाहर आता है. The air inside is replaced completely. There is always a mixture of air left outside and the air inspired. In other words, the lungs is only becoming better and worse with each inspiration and expiration. अंदर आया तो better, बाहर जाते हो worse. इतना ही मालूम. Quality wise, the expired air is less oxygen, more carbon dioxide, more water vapor, warmer and some bacteria. Common sense है. जो आप एक्सपेल करोगे, ऑक्सीजन कम होगा, CO2 ज्यादा होगा, वार्मर होगा, and it would be having some bacteria from the body. Then effect of altitude on breathing. As we go above at a higher environment, a height के ऊपर, what happens to the breathing? Faster or slow? Why? Are you finding difficulties? Why? Because the atmosphere air becomes thin, oxygen is less, so we are trying to manage that less air. कि कम से कम ऑक्सीजन में आपको जिंदा रखें. Okay? So hypoxia, asphyxiation. Hypoxia, deficiency of oxygen reaching the tissues. It may result due to sitting for long hours in a crowded room with poor ventilation. But also explain at a high altitude when the oxygen content of air is low. बहुत ही बड़े पैक रूम में जहाँ पे 500 बच्चे बैठे हैं, कोई विंडो प्रॉपर नहीं है वगैरह, तो वहाँ पे आपको सफोकेशन होता है. लालबाग साहब गाती है तू? गलती किया ना, मम्मी को बोलना चाहिए, मम्मी नेक्स्ट जाना 10 तरह. अभी मम्मी काय टाइम तो पास हो जाएगा ना 10. देवा माझ्या मुलीला चांगले 90% तर येऊन दे, तर मी तुला ठाव असं काहीतरी असेल. I find very strange people will to लगभग करना. मुझे जानना है एक ही बार पेरेंट्स को कुछ मुझे बहुत सफोकेशन होता है. मैं हम नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ जाना पड़ेगा. मुझे किसने बोला मैं वीआईपी दर्शन भी कराऊंगा तभी बोलना मैं बहुत सिंपल. मेरा आंसर यही होगा, भगवान सब जगह सेम होता है. मैं गणपति है, and if I really want to go, I would rather go to GSP गणपति than go to लालबाग. अगर तुम्हें GSP गणपति नहीं पता तो तुम बॉम्बे के लायक नहीं. It is much richer than Lalbagh Raja. Lalbagh Raja height है, तो GSP गणपति is the best managed गणपति in India. माटुंगा and बड़ा दो जगह. Only for 5 years, and the way it is maintained, you would be like wow. मुंह से ही निकलेगा. Okay, देखने जैसा होता है और लालबाग के राजा से तो 100 गुना बेटर मैंने. And we always go to regularly, हर दिन जाते थे कॉलेज में, क्योंकि उनका प्रसाद इतना तो हमें भूख लगी चलो. बिकॉज कितना भी बड़ा लाइन हो 15-20 मिनट के अंदर आप बाहर निकल. नॉट मोर देन हाफ एन आवर, नॉट मोर देन. उनका वैसा अरेंजमेंट. सो यू आर नॉट गोइंग नियर द गणपति. थोड़ा सा स्टेज से ऊपर से उठते ही निकल जाओ. सिर्फ जिनका वो पूजा भी होता है वो अंदर जाते हैं. तो उतना स्पीड एंड स्पाइन मेंटेन किया था ना कि आपको लगता है ये है. And लालबाग का राजा is a hype man. हाँ कुछ ज़्यादा ही पॉपुलराइज कर दिया. When I was your age ना, वहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म पे जाके उसके गणपति के यहाँ पे फोटो निकाल के पैर पे कोई पूछता नहीं था. हार्डली 10-12 दिन.
ओके फिर वो पिक्चर आया है कौन सा वो मराठी मूवी दैट इज एक्चुअल स्टोरी ऑफ लाल बाग राजा वो दो लाल बाग राजा ने कौन सा वो गणेश गली का पूरी क्रॉसिंग था किसका गणपति सबसे ग्रेट वो मुस्लिम को इसका वो कौन सा तो हीरो है वो मराठी में सो दैट वाज एक्चुअल स्टोरी ऑफ दैट किसका गणपति सबसे बड़ा उसके इसमें उन्होंने गणपति को बड़ा करने के लिए क्या किया मतलब दे कैच होल्ड ऑफ लिविंग भाई सबके साथ मीडिया में बोल कर मैं नर्वस होता था मुझे बच्चा हो गया ये हो गया वो हो गया सो उसका हाइप कर करके हाँ मतलब 10 साल से मुझे बच्चा नहीं हो रहा है ना गणपति का आग्रह दर्शन करते हो दैट वाज ऑल दिस थिंग्स सो अभी सब लोग बोलते हैं ना क्या गणपति सब जगह सेम ही होता है ना यू से गॉड इज वन एंड हाउ कैन बी लाल बाग का डिफरेंट एंड सिग्निफिकेंटली तुझे लेके गए मुझे जाना है ऑपोजिट पर्सनैलिटी इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम okay the way they throw you out and the rush अगर टीचर को जो क्या कुछ कर नहीं सकते हाँ बहुत लोग सब मर जाते हैं ऐसा कुछ मरते नहीं अभी से मुझे क्यों हुआ एक दो ऐसे तो देयर इज नो पॉइंट देखना है ना गणपति ना विसर्जन करते हो पूरा जब आ रहा है तो वही गणपति देखना है कभी नहीं नेक्स्ट पीपल देखा where the next part is your expectation condition with the blood because of venous diffusion of carbon dioxide and oxygen supply is diminished this may result in several causes strangulation what is strangulation चोक good गला दबा के मारना drowning or any obstruction in respiratory tract छोटे बच्चों में ज्यादा होता है because छोटे बच्चे खेलते खेलते गोटी अंदर कॉइन अंदर मार्बल कॉइन मोती नाक के अंदर ऐसे नमूने बहुत करते हैं बहुत कुछ करते हैं okay and that leads to this part artificial respiration is helpful in certain cases artificial respiration जो अपने हिंदी मूवी में बहुत अच्छे से दिखाते हैं okay that is artificial respiration mouth to mouth respiration okay some experiments on breathing and respiration experiments खुद करोगे या नहीं पर कौन नहीं पढ़ लेना अच्छा हाँ ठीक है नहीं देख ले इतना ही बाकी है नहीं है टाइम है 40 मिनट्स है 40 मिनट हाँ आधा घंटा रुको 2 मिनट बैठने दो 5 मिनट देना पानी पीता हूँ रिलैक्स कर तब तक एक्सपेरिमेंट तो पढ़ लो एक एक करके जोर से पढ़ना बस वो साथ में एक्सपेरिमेंट हो जाएगा पहला तू स्टार्ट कर पहला एक्सपेरिमेंट तू पढ़ पहला एक्सपेरिमेंट क्या होता है अरे पढ़ना To demonstrate that water is lost during breathing. Gently breathe upon a cool surface such as a piece of glass or slate. The water droplets appearing on the surface prove the presence of moisture in the I hope everybody does that अपन मिरर के ऊपर करेंगे तो पूरा वेव पढ़ना सेकंड में पढ़ेगा To demonstrate that CO2 is given out in breathing, set up an apparatus as shown in figure 14.9. Clip C is open and clip B is closed. Air is sucked in by the mouth through the tube at the center. Atmospheric air rushes in the flask A, bubbling through the light water. Next, clip C is closed and clip B is opened and air is blown through same central tube. This time, the air is forced into flask B, bubbling through its light water. The process is repeated about 10 times.
The lime water in class B turns milky much faster than class A. This proves that the expired air contains more carbon dioxide than the inspired one. तो मैं ना when you just blow out, it will have more milky because CO2 is more in that case. Try experiment. Two bird. To demonstrate the action of the diaphragm during breathing. Set up. यह सबने अपने कभी साइंस एक्सपेरिमेंट में या वो साइंस एग्जीबिशन में छोटे बच्चों ने कैसे के बच्चे करते हुए डेमोंस्ट्रेट करते As shown in figure 14.10, the rubber sheet tied around the bottom edge of the bell jar represents the diaphragm. When the sheet is pulled downward, volume is increased, pressure inside the bell jar is lowered, and the rubber balloons are expanded by the air rushing in through the tube at the top. When the sheet is pushed upward, volume is decreased, pressure inside the jar increased, and the balloons collapse due to the air rushing out. The balloons present the two lungs. अगर आप खींचोगे तो air goes inside and the balloon expands. When you just release that part, the air balloon get deflated. So in that it is exactly like lungs maybe. Next. To measure the volume of expired air. Set up an apparatus as shown in figure 14.11. Fill your chest with air to the maximum and then blow out through the short tube, expelling as much air as you can. The water expelled from the other tube when measured gives the volume of the air inhaled. तो इसका सिंपल एग्जांपल अपन बहुत बार देखा है फ्रूटी पी के खत्म ना तो अपने हम तो उसमें हवा बैठे तो आपको वो ऊपर आ रहा है फूलता भी है तो साथ में उसमें आप छोटा बड़ा फूल बच्चा होता फ्रूटी होगा वो भी ऊपर आएगा ट्राई करना पड़ेगा नेक्स्ट पीछे वाले नमूनों नमूनों से भी कोई पढ़ लेट आई ना To show that oxygen is taken in by animals during respiration, use a small animal such as a cockroach or a rat in this experiment. Take two conifers class A and B. Place a live cockroach in one class A and a dead cockroach that has been soaked in formalin to prevent decay in the other class B. Yeah, formalin is a disinfectant. इसलिए उसको डाला गया. This class is a dead cockroach. This class of the dead cockroach acts as a control. Put the rubber cork in the mouth of each class and make sure that the apparatus is airtight. Leave the class for a few hours, after which introduce a small burning candle into each class as shown in figure 14.12. Immediately after introducing the candle, close the mouth of the flask tightly. Note the time taken for the candle flame to go out. You will find that the flame goes out faster in class A, containing the living animal. Since oxygen supports burning, the flame of the candle goes out faster because the living cockroach also consumes oxygen for respiration. कॉमन सेंस है इस पे लिविंग कॉकरोच उस पे ऑक्सीजन यूज कर लिया उस क्लास में से उसमें अगर बर्निंग कैंडल यूज करेगा तो बंद करोगे तो इमीडिएटली बंद हो जाएगा बस ऑलरेडी ऑक्सीजन कम था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कॉकरोच उसने यूटिलाइज कर लिया तो इट विल एक्सटिंग्विश फास्टर इसमें डेड कॉकरोच है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा बिकॉज़ कॉकरोच हैज नॉट यूटिलाइज्ड द ऑक्सीजन तो वो थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद एक्सटिंग्विश होगा दोनों होंगे पर थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और थोड़ा बाद में क्या आप कर सकते हैं 5 मिनट का ब्रेक अब मुझे गला नहीं लगता क्या हुआ गरबा खेलने जाना संडे खेलने जाना क्या जाना है पे जाना है सिर्फ जाना है पे जाना है मम्मी डैड दूधी बेचते आज पावर डे नेक्स्ट मम्मी डैडी घर पे अभी सुबह काम पे जाना है स्कूल जाना है
सैटरडे को भेजेंगे, संडे को छुट्टी है, आराम से हो सकते हैं, मंडे रेडी साथ में। मेरे में नहीं है। अब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम का क्वेश्चन हो गया? हाँ। हो गया ना? अब कितना चैप्टर बाकी है? अरे इन जनरल कितने चैप्टर बाकी है? अपने फर्स्ट 7 हो गए? फर्स्ट 7 चैप्टर्स हो गए। हाँ। फाइव किंगडम, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, न्यूट्रिशन हो गया ना? आपको न्यूट्रिशन पढ़ा ना मैंने? लास्ट में न्यूट्रिशन ही पढ़ा ना शायद से? नहीं। पावर पॉइंट लास्ट टू लास्ट। पढ़ाया था ना? हाँ। डाटा सिस्टम, नहीं। स्केलेटन, हाँ। स्किन, हाँ। रेस्पिरेटरी, हाँ। हाइजीन, डिजीज, नहीं डिसीज नहीं हुआ। डिजीज हो गया ना? नहीं हुआ डिसीज। Sure. अबे यार नहीं हुआ है। मराठी में सब क्वेश्चन कवर न्यूट्रिशन का पढ़ता है। इसमें डिसेंट्री, टेनियासिस, नहीं एस्पेरियासिस, ओके, डिजीज नहीं होगा, एड्स टू वर्क नहीं होगा, सेलिब्रेशन हो गया, वेजरेशन हो गया, तो बच्चे सिर्फ डिजीज, एड्स टू वर्क और रेसिस्टेंस 3 plus 2 5 plus 2 7 मतलब maximum 6 to 7 words to word is us। उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद तुझे आशा मानना है, नहीं कुछ नहीं वायरस कैसे होगा। उसके बाद रिवीजन क्या आएगा? तो ये चाहिए नहीं चाहिए तो नहीं फर्स्ट नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। सेकंड के जाते हैं उसके बाद सेकंड के जाते हैं उसके बाद तुझे क्या चाहिए बेटा? रिवीजन या नहीं? हाँ। ऐसा बोलना, रिवीजन चाहिए। Someone will come and take care of it, don't worry। तुम्हारी शक्ति मुझे पसंद नहीं। पर कौन है क्षमता जो भी आएगा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? If time permits, I might come. If ma'am permits, ma'am will come. If other sir is there, that will come. कोई तो आ ही मुझे जाए। स्कूल में नहीं पढ़ाती। Okay, shall I? मैम नहीं आएगी। उनका 9 क्लास को भी पढ़ेगा। Okay. We go ahead with the last part, that is capacities of the lungs. Then इसमें स्कूल में सभी पढ़ाया है, कुछ स्पेसिफाई किया है। क्या हो गया? तो स्पेसिफाई कट किया है। हाँ, inspiratory reserve volume, inspiratory capacity, expiratory reserve volume का। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब कुछ है। एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए, ये पढ़ के, ये देख के इनको क्या लगता है हम डॉक्टर बनने वाले हैं? क्या हमें समझने वाला है? योग फील। इसमें हमारे काम का सिर्फ दो ही चीज था, एक तो वो टाइडल वॉल्यूम, दूसरा एक रेसिडुअल वॉल्यूम, और चलो वर्स टू वर्स में टोटल लग गया, उतना पढ़ लिया शायद काफी था। इंस्पिरेटरी रिजर्व ये वो कुछ नहीं समझ में आया, बकवास। और ग्राफ तो उससे भी हॉरिबल है। टाइम पास है। अब सबसे पहला, what is capacities of the lung for respiratory volumes are approximately then what we breathe in air in our body उसको बोलते हैं अपन lung capacities। okay? अब वो अलग अलग, इसका अलग अलग। सबसे पहला tidal volume। now what is tidal volume? Air breathe in and out in normal void breathing, something like this, जो अपन normal breathing करते हैं। So assuming that उस टाइम पे 500 ml एयर अंदर आया, okay? So when we do normal breathing, कितना एयर अंदर आया? 500। अभी 500 एयर कहाँ पे गया? अंदर कहाँ गया?
खून में नहीं, कहाँ पे गया है? सबसे पहले कहाँ जाएगा? It will go in the lungs. अब से वहाँ पे उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, dead air space and alveolar air space. Now what do you mean by this is, as the air passes through this, maximum air will reach over here, alveoli की जगह. तो जो alveolar में पहुंचा वो देखो कितना है. The tidal air containing air space, ये कितना है? 350 m. अब जो बचा 150 एयर है वो कहाँ पे जाएगा? कुछ एयर इस सेल्स के बीच में ब्लॉक हो जाएगी, ब्रोंकाई की जगह, ब्रोंक्यूल की जगह, डेड एंड की जगह पे. तो मान लो जैसे कि यहाँ पे ये नर्व यहाँ पे डेड एंड है, तो आगे एल्वेओलर में नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे एयर आगे बढ़ ही नहीं पाती, तो उस जगह पे वो आके रुक गई है. देयर इज नो फर्दर मूवमेंट एट ऑल. दैट इज अ डेड एयर स्पेस. मतलब वो कहीं पे भी यूज, अब बोला वी आर ड्राइविंग एंड वी रीच द डेड एंड, मतलब वहाँ पे भी आगे जाने की रास्ता ही नहीं है, तो वहाँ पे डेड एंड हो गया. So then that is known as dead space. So 500 अंदर आया, 350 एल्वेओलर में गया, तो बचा कितना? 150. That is my dead space. समझ में आया? Next, inspiratory reserve volume. Air that can be drawn in forcibly over and above the tidal level. Normal 500. So if I do something like this, forcefully मैं air को अंदर ले लो, then that is 3000 m. Inspiratory capacity. Total volume of an air person can breathe in after normal expiration. अब ये क्या होगा? मैंने नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद, नॉर्मल एयर लेने के बाद, तो नॉर्मल एयर को ले ही रहा हो, पर साथ में उसको फोर्सफुली भी इनहेल करो, तो 350 मतलब 500 जो टाइडल वॉल्यूम था, along with 3000 inspiratory reservoir, that together is my capacity. That is my inspiratory capacity. 3500. That is ऊपर का 3000 plus 500. That is inspiratory capacity. फिर आता है expiratory reservoir. Air that can be forcefully expelled out after normal expiration. हमने एक्सहेल किया, उसके बाद ऐसे कुछ ट्राई करना, तो पूरा निकलेगा ये 3000. What would be left is 1000 ml. That is 1000 ml. Vital capacity वो क्या है? Inspiratory capacity और या आपका expiratory reservoir, दोनों को मिला के बन जाता है आपका vital capacity. The volume of air that can be taken in and expelled out by maximum inspiration and expiration. Maximum inspiration is inspiratory reservoir. Exhalation is nothing but the expiratory reservoir. So 1000 plus 500. That is 4500. फिर आता है residual volume. Some amount of air that can be drawn in and expelled. Some amount of air is always left in the lungs even after forcefully breathing out. This is the leftover, that is residual volume. That is 1500 ml. अब इसमें 3500 ml में से what they say is 1500 ml गया, तो वो 2000 में से वो 500 गया, तो बचा 1500. अब इसको इतना ऐसा कुछ सोचना मत, सिंपल 1500 residual volume of air which is always present in the air in the lungs, because इसका बहुत बड़ा significance. Residual volume is always, रेसिड्यू का मतलब क्या? बचा कुचा, वो रहना जरूरी है, वरना lungs collapse हो जाए. That is why it is always required. Then comes total lung capacity. ऊपर का 4500 plus residual volume is 1500, that is 6000. Okay, so above the respiratory volume in millimeter, a normal are shown and have been summarized in box next. ये plus plus करते गए और वो सब दिया है. That completes the chapter. अभी आपके पास 20 मिनट, 10 मिनट बैठे for reading the part inspiration and expiration पढ़ा. पढ़ो.
इसके बारे में बताओ, राइट बताओ। तुमने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया, लेक्चर के लिए भी आया, मैं बोल रहा हूँ अभी मैं 2 घंटे के लिए आता तो बात अलग है, अभी मैं 20 मिनट जुड़ क्या मतलब उससे पहले उठ के जाऊँ, then ma'am also will come with me, she also get complaint. Cloud पढ़ना है, इंस्पिरेशन पढ़ोगे, अरे नारियल लो, हाँ मुझे पढ़ना है। नहीं मुझे पढ़ना है। Inspiration or inhalation is the result of increase in the size of thoracic cavity, and this increase is due to the combined action of the rib and the diaphragm. The rib move upwards and outwards due to the contraction of the external intercostal muscle stretched between them, thus enlarging the chest cavity all around. The internal intercostal muscles are relaxed. Diaphragm, a sheet of muscular tissue situated towards the base of the lung, which normally remains arched upward like a dome, contracts and flattens from the dome-shaped outline to an almost horizontal plane and thus contributes to the enlargement of the chest cavity lengthwise. As the diaphragm flattens, it presses the organs inside the abdomen, and with the abdominal muscles relax, the abdominal wall moves outward, leading to increase in volume of chest cavity and decrease of pressure. Decreased pressure. Decreased pressure inside the lungs draws the air inward. The outside air, being at a greater pressure, rushes in to equalize the pressure. When the thoracic chest cavity increases in size, its internal pressure is decreased. The lungs expand, and as a result, the pressure inside the lungs is lowered below the atmospheric pressure. आगे Exhalation or उसको expiration or exhalation is the result of reverse movements of the ribs and the diaphragm. The external intercostal muscles relax and the ribs move in automatically. The diaphragm is relaxed and moves upwards to its dome-like outline. As a consequence of the above-mentioned movements of ribs and diaphragm, the volume of the thoracic cavity is decreased and the lungs are compressed, forcing the air out into the atmosphere. When we breathe out forcibly or naturally, as it happens through intense physical exercise, the internal intercostal muscles also contract, causing further contraction of the rib cage to expel out more air for larger individuals. पीछे blood supply to the lungs. The right auricle pumps all the deoxygenated blood received in it from the body into the right ventricle. When it turns pumps it into the lungs through the main pulmonary artery. The pulmonary artery soon after its emergence divides into two branches entering their respective lungs. Inside the lungs they divide and redivide several times to ultimately form capillaries around the air. Veins arising from these capillaries join and return to form two main pulmonary veins from each lung, which pour oxygenated blood into the left auricle of the heart. The figure 14.6 represents the branching of respiratory passages and the blood circulation in the lung. The red parts represent oxygenated blood and the red brownish parts represent deoxygenated blood. The interconnecting capillaries between arteries and veins have not been shown in the upper figure to avoid complexity in the diagram. The lower figure shows a small, highly magnified part of the lung depicting air sacs and capillaries surrounding them with a connected pulmonary arteries and pulmonary veins. वही था ना आर्टरी कैपिलरी वेन अंदर आ रहा है वो आर्टरी था बाहर जा रहा है वो वेन था ईच लंग से 2 वेन है तो टोटल जो वेन 8 में जा रहा है वो 4 वेन्स होते हैं pulmonary veins are 4 which are opening into the left auricle
So by that, officially we have completed the chapter. अभी अपने पास 20 मिनट टाइम पास करना है। 15 मिनट कैसे क्या? अरे ये तरीका है ना? अभी कौन सा चैप्टर बाकी था? हो गया मेरा क्वेश्चन डॉक्टर Diseases. 5 मिनट बचे। अच्छा ना क्या कर रहा है सर? भजन चलो अल्लाह का हमारे ऊपर ना उसके ऊपर डांस कर रहा है। अबे घर पे घर से छोड़ के रहना, वहाँ पे सॉन्ग चालू है, भैया यहाँ पे सॉन्ग लगा देता हूँ। किधर करना पड़ेगा? हाँ। मैं यूट्यूब जिसको पीछे शूट कर Now, disease is there, leads to health, and that is 6 घंटा. Okay, I guess Saturday and Sunday को lecture लगाना है. I'm not taking 9 lecture. Sunday का lecture Monday को ही होगा. Sunday I am not taking any lectures for you. 10 पे नो. कहाँ पहला प्लान था कुछ. Okay, so I am not planning for 9 standard. I am planning for only 10 standard. Because 10th का सिलेबस बाकी है. तो आपका तो I think Monday we have a lecture now. So Monday we might complete disease. 1 घंटा ही है ना? 1 घंटे का तो disease पूरा नहीं होगा. तो disease बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है. So we might complete more than 75%. So उसके बाद लास्ट में लास्ट में पहला फिर disease के बाद क्या सिस्टम होगा? बाद लास्ट में ये बाय द वे मुझे एक समझ में नहीं आया 1 2 3 4 5 तुम पास तो जल्दी आ गए थे तो तुम्हें छोड़ना मुझे समझना आता है ये तो आप ही आई है ट्यूशन से आई हाँ तो आई तो एक घंटे की ना अकेले को आपको सिखाऊंगा नहीं वो बैठी रहेगी क्यों ऐसे ही स्टार्ट बजे तक रिकॉर्डिंग देखना डायग्राम ड्रॉ करना पे देख सकते नहीं इधर ही देखना हो अकेले बैठना भूत बंगले में Three minutes more. Wait. अल्लाह मुझे देख बोलो अपने देख भाई बोल रहे बहुत सुंदर दिखती है तुम्हें बड़ा Right, sir. Thank you, sir.